Salman, I have a question for you. You've been a part of the industry for and so many decades now. The last couple of years, obviously, it's been tough for all of us in India, but in tough times, you saw an excessive amount of negativity, trolling, and I think the Indian film industry has always been a little bit of a soft target. It's great to see that we bounced back, with a bang. But in the meantime, you've also had platforms like OTT, etc., become mainstay of Indian public. What are your views on how the two will coexist? Because you obviously live it every day. Will one impact the other, or? I really don't know. I mean, when there was just the film industry, TV was not there. When TV came in, a lot of people from the film industry started getting a lot of work on television. And then the people who did not get work on television, now they started getting work on OTT. So there's a lot of work for actors. But OTT has suddenly started becoming cooler than television, which I don't think. So, I mean, this is one lot of people. एक पहले जो parallel cinema हुआ करता था, वो अब OTT हो गया है. अब OTT का पहले चक्कर, I think the first one to start this off was, I think, Ram Gopal Verma, one of the first few to do that kind of stuff on OTT, and then after that people started watching, and I just think that I don't believe in that kind of content. I mean, I've been here since 1989, and I have never done any of this kind of stuff, so I just think that there should be a censor on OTT, and all this, vulgarity, nudity, gali galoch should, stop, because अब सबके पास ये सब फ़ोन पर आ गया है. चलो 15 साल का 16 साल का बच्चा देख ले, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी छोटी सी बेटी देखे पढ़ने के बहाने में. तो आई जस्ट थिंक दैट जो कंटेंट शुड बी चेक्ड ऑन OTT, एंड जितना क्लीन होगा कंटेंट उतना बेहतर होगा, एंड आई थिंक व्यूअरशिप उसकी ज़्यादा होगी. आप ये देख लोगे, आपने परफॉर्म कर लिया, आपने लव मेकिंग सीन्स कर लिए, आपने किसिंग कर लिया, एक्सपोज कर लिया, और आप अपने बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं और आपका लिफ्टमैन, आपका वॉचमैन आपका कंटेंट देख रहा है. सो आई जस्ट डोंट थिंक दैट वो अच्छा है. आई मीन फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वी डोंट नीड टू डू दैट. हिंदुस्तान में रहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, बट इतना ज़्यादा बीच में हो गया था. अब जाके थोड़ा कंट्रोल में आया है. Now people start doing a lot of good content and decent content. क्या होता है कि कुछ लोग कर लेते हैं, जो लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं उनको, और जो नहीं करना चाहते हैं they get left out. So इसके ऊपर सेंसरशिप तो होना ही होना चाहिए. जो हमारी पिक्चरों के ऊपर है, जब थोड़ा सा ब्लड आ जाए, ज़्यादा हो जाए, एक्शन ज़्यादा हो जाए, वो A सर्टिफिकेट दे देते हैं, UA दे देते हैं. तो वाई नॉट हियर. टेलीविजन पर भी है. मैं बिग बॉस होस्ट करता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि अंदर इतनी गाली गलोच होती है, इतनी मारपीट होती है, जो कि हम दिखा नहीं सकते. तो वो टीवी का जो सेंसर है, व्हाट इज कॉल्ड, हाँ क्या बोलते हैं टीवी के सेंसर को, कुछ है उनका एक, तो वो है जो भी है, तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से हम वो आपको वो दिखाते हैं. क्या अपने कुछ और ही है. हाँ ऐसा या अरे देखा, ये होता असली जर्नलिस्ट जोइता. व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग मी टेक्स्ट मैसेजेस दैट यू एक्साइटेड टू सी मी. Salman, one more question, and you mentioned this last when we met. Like even in the South industry, I think per number of people, they have more theaters than I think the Hindi film industry does. I think the biggest reason for China being such a big market, even for American films, is the massively large number of theaters that they have. What's your view on what we can do here? Because somehow private guys don't want to sort of look at investing that. Should it be something that sort of the government should look at as an infrastructure thing? So we earlier used to have a lot more theaters than we do now.
You know, there are 1,600, 1,800, 500, 400, 2,000 theaters shut in every state. I just think that they should open up. There's more revenue for everyone. It's more taxes for the government. They should just open up. More films can come in. Screens can come in. But let's see when that happens, that happens. Hi, Hi, Salman, Sana here from Indian Express. What an amazing storyteller you are, apart from being an actor. We just loved that. Salim Khan ka beta hoon. And you rightly mentioned the 5 stars, of course, have been ruling. But tell me about the time when maybe one or two of you were nominated together and you lost to each other. Like, how did you deal with that? I've always lost. I was never interested in awards. Till today, I'm not. I'm interested in the reward. And the reward is what I get from my fans and from, you know, the Hindi film going audiences and from the people of our country, the love and the respect that I get. So that is my reward. I mean, I have no problem against, I mean, they're calling this lady black lady. कहीं ये बाहर जाके बोलो किसी को तो पता चलेगा. ये मेरे हाथ में एक बार आई थी. शाहरुख के साथ मुझे ज़बरदस्ती जाके लेना पड़ा क्योंकि लोलो मेरे बगल में बैठी थी और शाहरुख बुला रहा था. It became a very awkward situation. जबकि सेकंड टाइम हुआ था बोला कि मैं ऐसे ही आऊँगा अवार्ड वगैरह लेने नहीं आऊँगा. I think Helen Auntie was getting something at that point of time and then they got me on stage to get an award. I left it there only. There. I think they have that award. No, it was Helen Auntie's award. No, there was The one. lifetime. There was one supporting award that was. There was something like that. Yeah. There was something like that. So I've never been interested in these awards because I've seen so many of them at home. So many of them at home, and then my dad had no work, and कभी कोई वो जो क्या होता था उसका वो दरवाजे का ऊपर का वो जो खराब हो जाता था तो उसको स्टॉपर के लिए यूज करते थे हम. और फिर जब घर में जगह नहीं थी तब फिर वो दे देते थे वो. तो ये है मेरी लाइफ की है जो है. बट इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि आता हूँ परफॉर्म करता हूँ अच्छा करता हूँ बुरा करता हूँ लोगों को अच्छा लगता है एंड आई एम हैप्पी विद दैट. दैट इज इट. और फिर क्या होता है कि इतने साल हो चुके हैं. मेन पॉइंट ये है कि इतने साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर. आई थिंक द यंगर जनरेशन should get the awards, not me. Why should I get awards? I know कि जैसे कि films like दबंग, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, यहाँ पे काम थोड़ा बहुत अच्छा है, you know, तेरे नाम. I didn't want anything. I just say कि पिक्चर चल गई है, इतने का बिजनेस किया है, हमारे हिंदुस्तान की जनता ने ये पिक्चर का अवार्ड मुझे दे ही दिया है. तो अब किसी दूसरे को वो अवार्ड दिया जाए तो उसका एक हाइप बनता है, उसका उसकी एक जर्नी उसकी शुरू होती है. That's why but मुझे हर अवार्ड फंक्शन बुलाएगा मैं चला जाऊंगा परफॉर्म करने के लिए, होस्ट करने के लिए. मेरा काम है. Thank you, guys. That was the last question. Preeti here from Bharat 24. Preeti, that's your last question. Just one thing before you ask Preeti, and I'll keep this to 1 minute. I think what Salman has also sort of spoken to you all about, and he's given 2-3 instances. I think as the Indian film industry grew, the awards franchise also grew from being a part of a small niche to it becoming a sort of a really large business. And Salman mentioned a very valid point about when a business grows too large on how either you self-regulate or it needs regulation, right? Because left to our own devices, I think human beings will find what we say the shortcuts. And he related an instance that happened with him in his first this thing. There have been other instances, and I think the onus is, at least in the last 7 years that I've been here, I think the onus is very, very clearly on us, and it is our job to make sure that we try our damnedest. Of course, mistakes will happen. We are human, but we try and damnedest to get every
little element of this award. Absolutely correct. And that's always been our endeavor. No, but I think he's right about that. He's 100% right about that. But इतने सारे अवार्ड हैं कि ये नहीं तो उसको दे दो, इसने परफॉर्म किया तो उसको दे दो. तो वो एक ओरिजिनलिटी, एक जेन्युइननेस, एक अवार्ड का हुआ करता था, वो खो गया कि जितेश के करीब कोई है तो उसको धड़ाधड़ अवार्ड मिले जा रहे हैं, ये सब बहुत हुआ है. लास्ट 7 साल में नहीं है और आगे भी नहीं होगा होपफुली. But I'm not talking about filmfare. I'm talking about the other awards as well. और वो उनको करना भी पड़ता है कि कोई अमेरिका में शूटिंग है, लंदन आई कैन नॉट मेक इट, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट को देना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, और वो नेक्स्ट बेस्ट ही होता है या थर्ड बेस्ट होता है. तो दोज गाइज आर नॉट देयर. तो वो पेरेंट्स नहीं होती, वो जो आपका टीवी का एक टीआरपी, वो जो रेटिंग, वो जो पैसे, वो जो इनके पैसे. इनफैक्ट सलमान ने बहुत गहरा पॉइंट बोला. सलमान, इफ आई कैन जस्ट ऐड, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे ये बोल रहे थे, बिकॉज एक टाइम पे 6 या 7 अवार्ड सेरेमनीज होने लग गए. सो ऑब्वियसली हम तो रेगुलर बेसिस पे मैगजीन चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, हमारा तो रेगुलर इंटरेक्शन होता है. बट फॉर अ लॉट ऑफ द अदर बिजनेसेस साल में एक बार बात करते थे, एंड ऑब्वियसली उनके लिए प्रेजेंस ऑफ बिग स्टार्स बहुत ज़रूरी था. इनफैक्ट वी टेक प्राइड के whether you love us or hate us, we should be fair. So I think Amir has made it very public that he is not a fan, but I think we've always जितेश 4 या 5 बार लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा कि कंगना जी ने कुछ इश्यूज रेज किए थे, बट शी इज़ अ 4 टाइम फिल्म फेयर अवार्ड विनर जिसमें से 2 साल वो अटेंड नहीं की थी. सो आर इंडिया, वी हैव टू मेक द चेंज अपने आप नहीं आएगा. Thank you, guys. I'm done with the questions. क्या Okay. क्या है, क्या सवाल क्या आपका?